Students, now we will talk about the bisection convergence and error bound. So first of all, let me tell you briefly what is convergence. Students, let's say say we have the exact value of the root. So it means that is the exact solution. And now we are going to find out we are going towards the exact solution. Basically, the ultimate goal is to find out the solution. So what happens that we, like for example, if you are using the bisection method, then we are going to find out the solution. Maybe you cannot find out the exact solution, but you are going to find out the approximate solution. So somehow you are approaching towards finding the root. Maybe, like for example, if you have this goal, let me uh, take one point, and then I guess it would be easy for you to understand. So students, let's say this is your point, and now you are moving toward, let's take this arrow. So I am now moving towards this point. See in the screen. So I am moving towards this point. So it means I am converging. So this is called the convergence, where you are simply approaching towards the solution, where the error between the exact solution and the approximate solution is going to be reduced. And students, if it is, for example, if you are moving away like this, if you are moving away, then it means you are diverging. So, so basically, in the bisection method, what happens that you are gradually approaching towards your main solution. स्टूडेंट्स कन्वर्जेंस बेसिकली क्या है कि बेसिकली आपका जो टारगेट है उसकी तरफ चलना, इस आसान अल्फाज में उसको आप कहेंगे कि दिस इज द कन्वर्जेंस. सो मैथमेटिक्स सेंस में अगर बात की जाए तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस पॉइंट से चल रहे हैं वो आपका फर्ज करें अप्रोक्सीमेट एक सोल्यूशन था, तो आपका जो मेन एग्जैक्ट सोल्यूशन जिसकी तरफ आप जा रहे हैं तो उसके दरमियान में एरर क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो जो आप करीब बढ़ रहे हैं तो आपका जो है वो कन्वर्जेंस हो रही है और आपका जो एरर है वो डिक्रीज करना शुरू हो गया. तो अल्टीमेट आइडिया तो यही है कि आपने एरर को कम करना है. अब स्टूडेंट्स, एरर बाउंड, बेसिकली एरर के बारे में तो आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. सो व्हाट इज योर बेसिक एरर बाउंड फॉर द बाइसेक्शन मेथड, or what is the criteria for it? Like, okay, you have a function here and you want to find out the solution of that equation. Maybe you have any nonlinear equation and you are going to find out the solution of that equation. So you have the interval, now you are reducing the intervals, but the question arises, for how long you need to half the interval, for how long, in how many steps you will reach your goal. So now you will use that concept of tolerance which I already told you. In simple words, tolerance means कि आपके पास what you consider as a tolerance in this case, एक तो आपके पास है what एक one thing is your actual root, and in the beginning in the equation you don't know the exact value of the root. Maybe even at the later stage, at the end of the day, even you don't know about the actual root because you are going to find out the approximate root. लेकिन फिर भी चलें, आपके पास एक आपने assume कर लिया, you have simply assumed that C is your actual root, and now you are going to find out the approximate root. So the question is the error, how much error you can simply afford, or it can be tolerated. That is called the tolerance, or in this case we have used the epsilon. Epsilon is basically a very small quantity in mathematics, you know that. So students, what happens that if for example one is your actual root, okay, you don't know about this value. The second one is approximated root. And now the question is, you want to go as much closer to that actual root as much as you can.
But of course, if you are going ahead, if you do maybe 50 number of steps, you will be very close to the root. If you make it 100, even if you will be more closer. But the question is, maybe if you are given that, okay, you can tolerate this uh, error. बेटा टॉलरेंस का मैंने पहले भी बताया, आसान अल्फाज में मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि देखें, अगर आप इन सिंपल वर्ड्स, कि अगर कोई आपको थोड़ा सा आपके साथ शरारत करता है, कोई टीज करता है थोड़ा सा, अब शुरू में, या मजाक करता है, तो वो मजाक आप शुरू में बर्दाश्त करते हैं, थोड़ा सा और करता है, थोड़ा सा फिर बर्दाश्त करते हैं, थोड़ा सा और करता है, आपका थोड़ा सा ना अब माइंड थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो रहा है, फिर थोड़ा सा और करता है, तो आप मुकम्मल तौर पर जो है वो आपकी बर्दाश्त से वो चीज़ बाहर हो जाती है, और आप क्या है गुस्से में आ जाते हैं। वही आपका टॉलरेंस लेवल होता है, बस वही एक लेवल है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, वो टॉलरेंस की कोई भी वैल्यू हम हमारे पास हो सकती है कि ओके, द एरर, दिस वैल्यू ऑफ द एरर इज एक्सेप्टेबल बेसिकली, सो दैट इज योर टॉलरेंस। सो स्टूडेंट्स, अपना हमारा जो गोल है वो क्या है, व्हाट इज द मेन टारगेट? लेट्स से सी इज योर एक्चुअल रूट एंड सी एन इज योर C, what is Cn? C1, C2, C3, C4, C5, like okay, n values, n iterations. So, so what you can do is, like, let's say general term is Cn, so Cn is your approximate root. So what is your ultimate goal? Ultimate goal is that Cn minus C absolute value, because this is a difference. So whether this is positive or negative, it has no meaning. So this is the same idea. So you are taking the positive value. So absolute value of the this difference, or this is what you call this one as the error. So error must be less than epsilon, and that is the tolerance. And now students, this is important thing to note here. What it says, let's say n is equal to 1. Students, let's say n is equal to 1. So this becomes as the first value. Let's say, let me draw it here. Maybe, I guess, then it would be much easier for you. Students, let me draw one line. Here you can take one value. And now students, I am going to make it half, means n is equal to 1. So this is, let's say, maybe this is not a good half, but let's say this is half. So students, this is your half now interval. Now, if you are taking n is equal to 1, then you can simply generalize this one. Let's say n is equal to 1. So students, if n is equal to 1, and then what happens, c1 minus c, and now you don't know about the exact value of the root. Let's say the root is maybe at this point, 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 maybe this one, this one, this one, any point, maybe here, 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 any point, right? But now root is either on this half, or on this half, or at this particular point. And it says that this error, let's say, okay, let me take this point, then it would be easy to understand for you. So let's say, and now let's say we have this point. Students, let me take it as black. So this point is your exact root. Let's say this is your exact root. And now you, first of all, the interval was this one, this blue line, the whole interval. Now you have considered that this is the proximate, because if you are considering the half value, you are considering that this is your approximate root. So now you are assuming that this point is your approximate root. So students, this difference is definitely less than this half. Or if the exact value of this point is exactly at this point, then it means this is 0. Even then this is smaller than the half. And if this point is exactly at this point, at the last stage, then this difference is equal to this half. So it means this error cannot be more than the half of the interval. This is quite clear. Either this can be equal or this can be
less than the half of the interval. And see this one, b minus a over 2, n is 1. So b minus a over 2 is basically the length of the half interval. So students, this error is always less than this half interval. And if you generalize this one, so Cn is less or equal to b minus a over 2n. So basically you are going to reduce the making the half of the intervals. बेटा आप दोबारा सुन लें कि देखें ये हमारे पास जो है, आप गौर करें, अगर आपके पास देखें ये फर्ज करें आपके पास एग्जैक्ट रूट है और आपने हाफ पहली लाइन ली है ना, हाफ लाइन ली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा आपके पास जो है वो आपका एक पहला अप्रोक्सीमेट रूट आपके सामने आ गया। अब बेटा ये अप्रोक्सीमेट रूट आया, अब आपने क्या किया कि आपने कहा जी कि इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस कितना है। बेटा आपने इंटरवल चूंकि हाफ कर लिया था तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आधे इंटरवल से तो कम ही होगा ना। हाँ, अगर ये पॉइंट इस जगह पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, ये ब्लैक एग्जैक्ट रूट इस पॉइंट पे आ जाए, तो फिर ये वाला जो डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द इंटरवल के बराबर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, एरर कम हो सकता है या उससे बराबर हो सकता है, लेकिन आपका बड़ा नहीं हो सकता। सो दिस मीन्स दिस एरर इज लेस देन वो दिस वन। लेकिन बेटा हमारा एक्चुअली टारगेट क्या है, हम तो ये करना चाहते हैं कि हमारे पास वो जो इंटरवल उसके दरमियान में जो लेंथ है, हमारे पास जो मैक्सिमम जो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ है, वो तो हम चाहते ही हैं कि वो दैट शुड बी लेस देन द एप्सिलॉन, दैट शुड बी लेस देन द एप्सिलॉन। So students, what is our ultimate goal is that what you want is that the error here, ये वाला एरर इससे क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, तो आपका ये वाला एरर क्या होना चाहिए था, अल्टीमेट आइडिया क्या है, एरर को क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको आपको क्या होना चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर बेटा ये लेस देन एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन क्या है, टॉलरेंस है, जो वैल्यू आपको गिवन होगी, मे बी 0.001, 0.002, 0.006, वट एवर द वैल्यू इज, ठीक है। नाउ टेक 2 power n to be on the other side of the inequality. So students, b minus a over epsilon and less or equal to 2 raised to power n. Now taking log both sides, so n log 2 आ गया and greater than or equal to log b minus a minus log epsilon. ये बेटा चूंकि ऊपर था तो इसको नीचे वाला उसकी वजह से माइनस साइन आ गया, राइट। सो n is greater than or equal to log b minus a mod value minus log epsilon over log 2. तो बेटा ये what is n here, n is the number of iterations, so it means to reach at a given tolerance. So by this formula, you can simply see in the beginning, before starting even the question, you can see that how many iterations you need. वो जब अब बेटे आगे हम एग्जांपल करेंगे तो definitely you will get the idea that how many, what does this mean, that how many iterations you need to reach at a particular level. अगर आपके पास tolerance given है, फर्स्ट करें 10 raised to the power -6, very small quantities there, very small quantity, तो यहां तक पहुंचना कितनी आपको iteration करनी पड़ेंगी इस लेवल पे आने के लिए, कितनी दफा आपको हाफ इंटरवल बनाने पड़ेंगे, तो बेटा आपको यहां से n से पता लग जाएगा। तो n या तो इक्वल होगा या उससे अगली वैल्यू होगी, ठीक है। एंड देन मस्ट मिनिमम आइट्रेशन उतनी जरूर चाहिए आपको। तो बेटा इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि अब ये आपका मेथड कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो लेट्स कंसिडर नाउ एन एग्जांपल। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो नाउ यू कैन सिंपली आस्क मी।